like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। सिस्टम इन्फॉर्मेशन मिलता है, मेमोरी इन्फॉर्मेशन मिलता है, प्रोसेसर इन्फॉर्मेशन मिलता है, और यहाँ सबसे नीचे आएंगे तो आपको मिलता है डिवाइस इन्फॉर्मेशन। तो डिवाइस में आपको चेक करना है कि आपका जो हार्ड डिस्क है वो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दो केस हो सकते हैं, यहाँ पे नन है, यानी कि मेरा जो SSD है, मेरी जो हार्ड डिस्क है वो शो नहीं कर रही है। ठीक, तो एक केस तो ये हो गया कि हार्ड डिस्क शो नहीं कर रही है मेरी SSD, और दूसरा केस ये हो सकता है कि हार्ड डिस्क शो करे, यहाँ पे शो कर रही हो, उसके बावजूद भी सेम एरर आप फेस कर रहे हो। ठीक, तो सबसे पहले अगर हार्ड डिस्क शो नहीं कर रही तो आप एक बार यहाँ से रीस्टोर कर दीजिए इसको। जस्ट रीस्टोर पे क्लिक करके ओके करना है, कोई भी सेटिंग अप्लाई नहीं करनी है, रीस्टोर कर दीजिए। ये आप तब कीजिए जब आपका हार्ड डिस्क शो नहीं कर रहा हो। ठीक, तो रीस्टोर करने के बाद इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। रीस्टोर करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी भी हार्ड डिस्क जो है वो नन होगी, मतलब शो नहीं कर रही है। देखिए हार्ड डिस्क शो नहीं कर रही है, हालांकि हमने रीस्टोर कर दिया है। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, My life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of